1 falter, verb. पसु पेश करना, हकलाना, लड़खड़ाना. Lose strength or momentum. 2 contradictory, adjective. मुतज़ाद, तरदीद करना, बरक्स. Mutually opposed or inconsistent. 3 turmoil, noun. अफरा-तफरी, खलबली, हलचल. A state of great disturbance, confusion, or uncertainty. 4 simultaneous, adjective. बैक वक्त, एक साथ, एक ही वक्त में. Occurring, operating, or done at the same time. 5 confrontation, noun. झगड़ा, मुकाबला करना. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. 6 partisan, noun. कट्टर, सख्तगीर, हामी, मुतासिब. A strong supporter of a party, cause, or person. 7 formidable, adjective. डराना, खौफनाक, हौलनाक. Inspiring fear or respect through being impressively large, powerful, intense, or capable. 8 defiance, noun. नाफरमानी, इन्हिराफ, सरकशी. Open resistance, bold disobedience. 9 combative, adjective. लड़ाका, मुतनाज़ा, झगड़ालू. Ready or eager to fight or argue. 10 rhetoric, noun. फिन खिताबत, फिन तहरीर, गरजदार आवाज़. The art of effective or persuasive speaking or writing, especially the exploitation of figures of speech and other compositional techniques. 11 unseemly, adjective. बेतरतीब, नाशाइस्ता, नामुनासिब. Of behavior or actions, not proper or appropriate. 12 ailing, adjective. अलील, बीमार, मरीज. In poor health. 13 fraught. भरा हुआ. Situation or course of action filled with something undesirable. 14 contentious, adjective. झगड़ालू, मुतनाज़ा, फितनासाज. Causing or likely to cause an argument, controversial. 15 unrelenting, adjective. सख्त, मुस्तकिल, संदिल. Not yielding in strength, severity, or determination. 16 propel, verb. आगे करना, धकेलना, ताकीद करना. Drive or push something forwards. A promising initiative by the Jamaat-e-Islami for a dialogue between the government and opposition seemed to falter early in the process due to hardline postures and contradictory signals from both sides. Meetings by the Jamaat leader with Prime Minister Shehbaz Sharif and opposition leader Imran Khan raised hopes that a serious effort might get underway to break the dangerous deadlock, which has left the country in a state of turmoil and chaos. More significantly, the Supreme Court provided an opportunity to political parties to forge a consensus on a common date for holding simultaneous provincial and national elections. During the hearing on the election issue earlier this week, the court invited political party representatives and asked whether they could reach an agreement, in which case it would be prepared to show flexibility on its earlier order that fixed May 14 for elections in Punjab. The Chief Justice made it clear that if political parties come together, the court could make room for them and change the date for elections. If not, elections will be conducted on May 14. The SC warned that time was running out to settle this dispute and it would not go back on its order for May 14 polls. These developments came in the backdrop of rising public pressure for the ruling coalition and opposition to come to the negotiating table to end the political impasse. Many civil society organizations collectively called for talks. So did the business community through the Pakistan Business Forum. The media too has long been urging a national dialogue to break the gridlock. It seemed a hopeful sign that senior representatives from many political parties showed up for the SC hearing in response to its call. Party leaders from the ruling coalition told the SC they were ready to talk to the opposition on the election issue. PTI leaders said they wanted elections, but this must be in line with the constitution.
They expressed doubts about the government's sincerity, pointing to the vitiation of the atmosphere by arrests of thousands of PTI workers. The Jamaat leader proposed calling elections after Eid and recalled that confrontation between PMLN and PPP had paved the way for martial law in the late 1990s. The hearing was adjourned till next week, with coalition spokesmen claiming they will pursue dialogue after Eid. Political leaders should rise above partisan interests to forge agreement on the election date and code of conduct. Whether or not political dynamics will then be any different, urging political rivals towards compromise, the signs are not encouraging. In press conferences after the SC hearing, leaders of some parties, including PPP, sent rather negative signals. Earlier, the Jamaat leaders' mediatory efforts confronted formidable though predictable obstacles. Imran Khan constituted a negotiating team, only for a PTI spokesman to dub the talks offer as a joke in view of the government's actions. He also said there could be no talks without the establishment, the real decision-maker. For their part, PMLN and its coalition partners spent more time on political maneuvers to circumvent the Supreme Court order on Punjab elections than directing their energy to dialogue. In recent weeks, the government also stepped up confrontation with the judiciary. In its ruling of April 4, the Apex Court had instructed the Election Commission to secure funds from the government to hold provincial elections on May 14. But the government ensured through a series of legislative moves for Parliament to reject any allocation of funds. Despite 3 SC directives for release of funds to the ECP, the government refused to comply. This defiance put PDM on a collision course with the SC, but the government cast this battle as one between parliamentary authority and a court overstepping its mandate. Combative rhetoric by PMLN ministers against the CJP, including accusations of misconduct, seemed designed to pressure him to step down. But this was in vain. For his part, the CJP warned the government's failure to provide funds could have serious consequences. It is now for the government to show leadership and try to reach an accord with the opposition on a common date for elections. Under the Constitution, the National Assembly will stand dissolved in August, which means the coalition government has just about 4 months left in its term. This should be reason enough for it to offer a compromise to end the election dispute, which has produced unseemly clashes between state institutions and exacted a heavy toll on an ailing economy. To continue to play for time makes little sense. If the coalition government sought time to weaken Khan, that hasn't happened. In fact, multiple cases filed against him have only helped to consolidate his political base and hardly affected his popularity. A consensus on when elections should be held is necessary because it would also help to facilitate agreement on the code of conduct and rules of the road leading to polls. In the absence of an agreement, the polarized and fraught atmosphere will make the electoral process highly contentious, even violent. There is every possibility that the losing side will not accept the election results. Pakistan already has an unedifying history in which almost every election result has been disputed. During the 1990s, PMLN and PPP took turns to accuse each other of winning through ballot fraud. In the 2013 polls, when Khan's PTI lost to PMLN, he called the election the biggest fraud in the country's history. In the 2018 polls which Khan won, both PMLN and PPP accused his party of widespread rigging with the establishment's help. This troubled background provides the most compelling case for pre-election political consensus. The greatest risk of unrelenting confrontation between the government and opposition and ongoing institutional clashes is that they can propel the country towards a constitutional breakdown. This can have grievously destabilizing consequences in the midst of an economic crisis. It can be averted if political leaders acknowledge the risks, put partisan interests aside, and reach an understanding on the election timing and how polls should be conducted. The post-Eid period will be a test of whether leaders can put the country's interests before their own. The writer is a former ambassador to the US, UK, and UN. Published in Dawn, April 21, 2023. Subscribe our channel.
Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए की जाने वाली एक उम्मीद अफजा कोशिश दोनों जानिब से सख्त गिर मौक़िफ़ और मुतज़ाद इशारे की वजह से इस अमल के आगाज़ में ही नाकाम होती दिखाई दे रही थी। जमात इस्लामी के रहनुमा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर इमरान खान से मुलाकातों से ये उम्मीद पैदा हुई है कि इस ख़तरनाक डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए संजीदा कोशिशें की जा सकती हैं, जिसने मुल्क को अफरातफरी की हालत में डाल दिया है। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को एक साथ सूबाई और कौमी इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुश्तरका तारीख पर इत्तेफाक राय पैदा करने का मौका फराहम किया। रवां हफ्ते के अवाइल में इंतखाबी मामले पर समाअत के दौरान अदालत ने सियासी जमातों के नुमाइंदों को मदऊ किया था और इस्तिफसार किया था कि क्या वो किसी मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। इस सूरत में वो पंजाब में इंतखाबात के लिए 14 मई की तारीख मुकर्रर करने के अपने साबिका हुक्म पर लचक दिखाने के लिए तैयार रहेगी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि अगर सियासी जमातें इकट्ठे हो जाएं तो अदालत उनके लिए जगह बना सकती है और इंतखाबात की तारीख तब्दील कर सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंतखाबात 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनब्बे किया कि इस तनाज़ा को हल करने का वक्त ख़त्म हो रहा है और वो मई के इंतखाबात के लिए अपने हुक्म से पीछे नहीं हटेगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब हुक्मरान इत्तेहाद और हिज़्ब इख्तिलाफ पर सियासी तत्तुल को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए अवामी दबाव बढ़ रहा है। सिविल सोसाइटी की बहुत सी तंजीमों ने इज्तिमाई तौर पर बातचीत का मुतालबा किया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के जरिए कारोबारी बरादरी ने भी ऐसा ही किया। मीडिया भी तवील अरसे से इस जाल को तोड़ने के लिए कौमी मुकालमे पर जोर दे रहा है। ये एक उम्मीद अफजा इशारा था कि कई सियासी जमातों के सीनियर नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट की कॉल के जवाब में समाअत के लिए आए। हुक्मरां इत्तेहाद की पार्टी रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो इंतखाबी मामले पर अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि वो इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन ये आइन के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने पीटीआई के हजारों कारकुनों की गिरफ्तारियों से माहौल खराब होने की तरफ इशारा करते हुए हुकूमत के खुलूस पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया। जमात इस्लामी के रहनुमा ने ईद के बाद इंतखाबात बुलाने की तजवीज़ पेश की और याद दिलाया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादुम ने 1990 की दहाई के आखिर में मार्शल लॉ की राह हमवार की थी। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई क्योंकि इत्तेहादी ओहे के तर्जुमानों ने दावा किया था कि वो ईद के बाद बातचीत करेंगे। सियासी रहनुमाओं को जमाती मुफादात से बालातर होकर इंतखाबात की तारीख और ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तेफाक राय कायम करना चाहिए। इसके बाद सियासी हरकियात मुख्तलिफ होंगी या नहीं, सियासी हरीफों को समझौते की तरफ राग़िब करेंगी या नहीं, इसके इशारे हौसला अफजा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसों में पीपल्स पार्टी समेत कुछ जमातों के रहनुमाओं ने मनफी इशारे दिए। इससे कबल जमात इस्लामी के रहनुमा की सालसी की कोशिशों को ज़बरदस्त लेकिन मुतवक्किल रुकावटों का सामना करना पड़ा। इमरान खान ने सिर्फ पीटीआई के तर्जुमान के लिए मुज़ाकराती टीम तश्कील दी ताकि हुकूमत के इक़दामात के पेश नज़र मुज़ाकरात की पेशकश को मजाक करार दिया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हकीकी फैसला साज एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई बातचीत नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों ने पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज करने के लिए अपनी तवानाई मुज़ाकरात पर मरकूज करने के बजाय सियासी हरबों पर ज़्यादा वक्त सिर्फ किया। हालिया हफ्तों में हुकूमत ने अदलिया के साथ महाज आराई में भी इजाफा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी वो 14 मई को सूबाई इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत से फंड्स हासिल करे, लेकिन हुकूमत ने कानून साजी के मुताद्दिद इक़दामात के जरिए इस बात को यकीनी बनाया कि पार्लियामेंट फंड्स की किसी भी अलॉटमेंट को मुस्तरद करे। इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने की सुप्रीम कोर्ट की 3 हिदायत के बावजूद हुकूमत ने इस पर अमल करने से इनकार कर दिया। इस मुखालफत ने पीडीएम को सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव की राह पर डाल दिया, लेकिन हुकूमत ने इस लड़ाई को पार्लिमानी अथॉरिटी और अदालत के दरमियान अपने मैंडेट से तजावुज़ करने के तौर पर पेश किया।
मुस्लिम लीग नून के वज़रा की जानिब से चीफ जस्टिस के खिलाफ जारहाना बयानात बशमूल बदसलूकी के इल्ज़ामात उन पर ओहदा छोड़ने के लिए दबाव डालने के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन यह बेकार था। चीफ जस्टिस ने खबरदार किया कि हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी में नाकामी के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अब यह हुकूमत पर मुनहसर है कि वो क़यादत का मुजाहरा करे और इंतखाबात की मुश्तरका तारीख पर अपोजिशन के साथ समझौते तक पहुंचने की कोशिश करे। आइन के तहत कौमी असम्बली अगस्त में तहलील हो जाएगी, जिसका मतलब है कि मखलूत हुकूमत की मुद्दत में सिर्फ 4 माह बाकी रह गए हैं। यही वजह है कि वो इंतखाबी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए समझौता करे, जिसकी वजह से रियासती इदारों के दरमियान गैर मामूली झड़पें हुई हैं और बीमार मईशत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वक्त के लिए खेलना जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर मखलूत हुकूमत ने खान को कमज़ोर करने के लिए वक्त मांगा तो ऐसा नहीं हुआ। दरहकीकत इनके खिलाफ दायर मुतअद्दिद मुकदमात ने सिर्फ उनकी सियासी बुनियाद को मुस्तहकम करने में मदद की है और उनकी मकबूलियत को शायद ही मुतासिर किया है। इंतखाबात कब मुनक़िद होने चाहिए इस पर इत्तेफाक राय ज़रूरी है, क्योंकि इससे ज़ाब्ता अखलाक और इंतखाबात की तरफ जाने वाले रास्ते के कवायद पर इत्तेफाक राय को आसान बनाने में भी मदद मिलेगी। किसी मुआहदे की अदम मौजूदगी में पुरराज़्द और कशीदा माहौल इंतखाबी अमल को इंतहाई मुतनाज़ा और पुरतशद्दुद बना देगा। इस बात का पूरा इम्कान है कि हारने वाला फरीक इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान की पहले ही एक गैर मुतज़लज़ल तारीख रही है, जिसमें तकरीबन हर इंतखाबी नतीजा मुतनाज़ा रहा है। 1990 की दहाई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बारी बारी एक दूसरे पर बेल्ट फ्रॉड के जरिए कामयाबी का इल्जाम लगाया। 2013 के इंतखाबात में जब इमरान खान की पीटीआई मुस्लिम लीग नून से हार गई तो उन्होंने इंतखाबात को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दिया। 2018 के इंतखाबात में इमरान खान ने कामयाबी हासिल की थी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने उनकी जमात पर एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बड़े पैमाने पर धांधली का इल्जाम आयद किया था। ये परेशान कुन पस मंजर इंतखाबात से कबल सियासी इत्तेफाक राय के लिए सबसे मजबूत केस फराहम करता है। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान गैर मुतज़लज़ल तसादुम और जारी इदारा जाती झड़पों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो मुल्क को आईनी टूट फूट की तरफ ले जा सकते हैं। माशी बहरान के दरमियान इसके संगीन अदम इस्तेहकाम के नताइज हो सकते हैं। अगर सियासी रहनुमा खतरात को तस्लीम करें, जानिबदाराना मफादात को बालाए ताक रखें और इंतखाबात के वक्त और इंतखाबात के इनेकाद के तरीक़ाकार के बारे में इत्तेफाक राय पर पहुंच तो इससे बचा जा सकता है। ईद के बाद का अरसा इस बात का इम्तिहान होगा कि क्या रहनुमा अपने मफादात पर मुल्क के मफादात को तरजीह दे सकते हैं। मज़मून निगार अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ सफ़ीर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 21 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.